Good morning, everyone. Welcome to the live trading. And today is 11th of July, and it is 10:10 right now. And if you see, the market has, if you remember, कल आपको जो बताया था, ये level हमने बताया था. If you remember, we have put the support and resistance in the नहीं, ठीक है. तो above this I had told you it is positive, below that I had told you it is negative. तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, there is no point in looking at selling. ठीक है. Same thing here also. ये हमने actually आपको बताया था कि above this it is positive, below this it is negative. So overall it can be in this range. So market has actually started itself above this. So it has stayed above this only. तो हमारा लेवल के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि मार्केट इज वर्किंग एज दैट, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर शुरुआत किया है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहा है. तो लेट अस लुक एट व्हाट आवर calculator has done in the morning. If you talk about Nifty, the Nifty, this is 19,400 call and 71 is the price. Okay, so let's look at what has our calculator given. So for 71, let me actually remove. Let's put this 71. So above 80 is the buy. Above 80, 75 is your stop loss. 90 is your target. Next is 110. So it can move in that direction. See market, if you can get two targets, it is fantastic. Let us see one or two targets is great here. So let's see, it has done up to 101. So that means it has done the first target, second target, it has not even able to go till there. And I think it is doubtful after this. So let us see here. In the morning, above 80 is the buy. Below, if you see, it has not come there. So almost there it is. See, the first 5 minutes you can rather ignore. Okay, it has to stay there. It is not staying there. There's no point. And above that, 90 is done. So you have trailed your stop loss to your entry. Now next you can look for the 110, but 100 is another important number. So and if you can book profits, it's great. So almost around 20 points you would have made there. Very fast move. Yeah, you will get. That's why you have to be prepared. Level whatever I have given you, it has worked there. Let's look at the this is the put option. So 143.7 is the open. So our high itself is that. So that entry itself would have not come. So if you see 144 will the number, 150 is our entry price. It has not even come there. So there's no point in looking at put here. So this is 44,800 call. So it is 284. So let's add 284 here. And above 290 is the buy. And here I will not look more than one target because Bank Nifty is the weaker one, but it has done more than that. 354 it has done. That means it has done the second target also. And so let's see here. First is 290. Above 290 is the buy. Above 290 it can move towards 310. If it goes to 310, 290 is your stop loss. Okay, it has done that. 290 is your stop loss. Next is 340. So I am actually out of it. I am not interested to hold it. And you can see it has come down. I didn't get you what SR level, support resistance. See, daily I'm sharing in the in the YouTube, right? I'm sharing with you. It is available for free. Use this. See, I had very clearly told above 19,400 is up only, and below this only it is down. Otherwise, it is in this range. So if it has to come down, at least 19,400 it has to break.
Without that, actually, there's no point in looking at puts. A round number now 19,500 is the round number. No. So here also see 45,000 is a round number. So below that it can come down. So till it is holding that, it is positive. So let's see what it will do. Bank Nifty is the weaker one, and this has to come down. So for Bank Nifty put, let us actually look at this. See, it has to break this. See, open and high is same. Open and this has to break. So 323. See, for us, I think where is the 323? It has to go above 340. Then only buy will come. Till then, buy is not there. So it has to see, this is the weaker one. It has to go above 340. Right now, it is still 266. So we can also look at something like what is the low. We can probably look at plotting this. We can add this 211. So we can see if you want to take a trade now, 220 has to be your stop loss. Okay. Right now, the stop loss will be a little bigger because if this is a reversal, then 220 is your stop loss. And or else we can, right now, where is the price? Price is at 266. Okay, let us think about this. 230 is the thing. Then if it is 240, then it has gone above this. It has not gone above this. So 230 can be our stop loss. Okay, 230 can be the stop loss if you want to take the trade now. But right now, one thing is it has already started moving on the upside. It starts going above 320, what do you say, above 340, then actually it is a confirmation. Okay, till then actually this may have some challenges. It may be sideways, but I think already buying has been happening at the lower level. One second. Let's move ahead. So currently it is still consolidating. It has to start trading below this. Let it break it, or else actually if you are taking the trade, as I said, you can keep that as a stop loss. But again, if the reversal is still not in place, then the stop loss will trigger. So you should be aware of the risk. आपको risk का clear समझ में आना चाहिए. अभी आप trade लेते हो तो आपका risk क्या होगा? देखिए 267 के आसपास है, 265 के आसपास है, तो 230 आपका स्टॉप लॉस है, तो 35 पॉइंट्स का रिस्क होगा. 35 into 25. सो दैट इज योर रिस्क अगर एक्चुअली आप ये ट्रेड लेते हो तो, क्योंकि हमारा जो कंफर्मेशन आएगा 340 के ऊपर ही आएगा. पर 340 थोड़ा ऊपर है रिस्क रिवार्ड के लिए, और आप अगर मोमेंटम आ जाता है तो आप खो सकते हो, या यू हैव टू वेट टिल हियर. सी देखिए, रिमेंबर दिस व्हाट वी हैड टोल्ड, more than 1 hour, if it is actually getting into this consolidation, then actually we may get that movement on the downside. So we have to wait for it. Same thing is happening in bank nifty, sorry, nifty also. Nifty may be देखिए, almost half an hour has done, maybe another half an hour if it can spend here, then see, more the time it spends, bigger the amount of fall it can happen. बड़ा फॉल भी आ सकता है अगर ज्यादा वक्त तक यही बिताता रहेगा, because next time for nifty is somewhere at 12:30. For bank nifty we are having some time at around 11:45, so you can either wait here and at this time you can take, or let it break this and start moving down, then you can take. अभी लेना है तो I have already given you what is the risk. If that risk you can take, you can always do that. So as of now, if you look at the overall market is looking quite healthy at this point of time.
बट ट्रैप करने के लिए ऐसे ही करते हैं। एंड जनरली इफ बड़ा मूवमेंट जो भी आएगा, लुकिंग एट दैट वन डिक्लाइंस, आई डोंट थिंक जल्दी मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा तो नहीं दिखता है। तो शायद ये दोपहर का बाद ही होगा, आफ्टर 12:30, 1 o'clock, 1:40, ऐसा ही कुछ होगा ये, इतना जल्दी नहीं होगा। लॉट ऑफ स्टॉक्स आर अप, यहाँ पर ऐसा कुछ खास वीकनेस नहीं दिख रही है कहीं पर भी। ओनली इन द ऑप्शन चेन में भी आप देखोगे तो व्हाट हैज हैपेंड इन द ऑप्शन चेन, निफ्टी का ऑप्शन चेन थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी का ऑप्शन चेन इज स्ट्रांग। इफ यू सी द पीसीआर, और पीसीआर तो ग्रेटर देन 1 हो गया। ओके, पीसीआर हैज गॉन वे हायर। सो अभी एक्चुअली इसको रिवर्स होना है, रिवर्स होगा तभी एक्चुअली आएगा, वरना एक्चुअली मार्केट आज पूरा दिन साइडवेज ही बिताएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए, देयर इज अ कंप्लीट disparity here. बैंक निफ्टी क्लियरली इज एक्चुअली वीक, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो द पीसीआर इज क्लियरली ऑन द नेगेटिव साइड हियर। एंड यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट लेवल है 45,000। तो 45,000 के नीचे यहाँ पर अच्छा सा नीचे जा सकता है। इट हैज ऑल द पोटेंशियल पॉसिबिलिटी, मैंने आपको कल भी दिखाया था यहाँ पर। See, Nifty has actually violated the levels of um, the head and shoulder, but Bank Nifty has not done. So this is for the Bank Nifty. So Bank Nifty का ये actually एक और बार भी retracement आया है, तो ये actually तोड़ना चाहिए। Once it is going to break this, then there is a good downside which can take it towards 44,300 तक भी जा सकता है। But अभी Nifty is निफ्टी ने इसको वायलेट कर दिया है। निफ्टी में वायलेशन तो हो चुका है, बट ये नया कुछ बन सकता है। ये तो वायलेट हो चुका है, देखिए ये हेड एंड शोल्डर वायलेट हो चुका है। हेड एंड शोल्डर हम नहीं मान सकते अभी, बट यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जैसा एक्चुअली अभी बन सकता है, ऐसा एक्चुअली कुछ बन सकता है अभी। एनीवे वो जरूरत भी नहीं है, अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो इट विल टेक निफ्टी अलोंग विद इट, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% ऑफ निफ्टी इज एक्चुअली द पोर्शन इज एक्चुअली कवर्ड विद बैंक्स। तो देखते हैं, एंड लेट अस लुक एट सम स्टॉक्स। आज के लिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं अभी के लिए। let us see which stocks can actually go down. See, we just have to wait for that confirmation to happen. एक बार कंफर्म कर देगा तो यहाँ से एक्चुअली अच्छा खासा डाउनसाइड आएगा मार्केट में। So, but looking at all the other things, दोपहर के बाद ही दिखता है, यहाँ पर इतना जल्दी तो कुछ नहीं दिखता है। So let us see if there is any stock specific opportunities, we will see. देखिए ये सीमेंस है, सीमेंस has moved up, तो वेट करते हैं यहाँ पर। सारा स्टॉक्स जो नीचे था वो थोड़ा ओके। एनीवे यहाँ पर मैं आपको लेवल बता देता हूँ, क्योंकि सीमेंस में ये कुछ यहाँ पर भी एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट यहाँ पर एक सीआईपी हो चुका है, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है। सी वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 3700, कल हुआ था बट फिर से ऊपर गया है। सो अभी इट हैज टू स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 3700, उसके बाद ही एक्चुअली यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, वरना अभी तो पॉजिटिव ही है अबाउट 3700। यहाँ पर
टीवीएस मोटर में ठीक है, यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस है, देयर इज अ रेजिस्टेंस एट दिस प्लेस एवरी नाउ एंड देन, एंड हियर आल्सो इट इज हैविंग सम चैलेंज। तो अभी इम्पोर्टेंट है कि इट हैज टू स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 1330। इट हैड क्लोज बिलो 1330, अगेन इट हैज एक्चुअली मूव्ड अप, बट इसको 1330 के नीचे एक्चुअली ट्रेड करना है, एंड इट हैज टू स्टार्ट ब्रेकिंग 1300, देन एक्चुअली यहाँ पर कुछ अच्छा सा वीकनेस आ सकता है। तो देखते हैं, ओवरऑल एक्चुअली मार्केट अभी तो स्ट्रांग ही दिख रहा है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी, एक मिनट, let's actually remove all the filters first. Let's see if there is any volume. Which volume तो बड़ा है, let us see which has got the volume. ABFRL. आदित्य बिरला फैशंस, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। ओके, सी यहाँ पर दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस विच इज एट 221। अभी कहाँ पर है, वी आर ऑलमोस्ट एट दैट प्लेस ओनली, तो हम एक रेजिस्टेंस के आसपास है। तो लेट अस लुक एट द गैन नंबर्स। एक काम करते हैं, लेट अस सी द गैन नंबर्स। 20 के 230 के ऊपर है, उससे पहले 210। so what is needed, अभी थोड़ा सा we are in between, so what we need, let me mark both the levels. देखिए 210 to 212 ये एक्चुअली लेवल से, अभी तो वी आर जस्ट इन बिटवीन, और वी कैन मार्क दिस लेवल आल्सो। ये अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट एक्चुअली आज का लो के नीचे जाना पड़ेगा, तो नहीं जाता है तो यहाँ से तो पॉजिटिव ही दिखता है, तो इट कैन मूव टुवर्ड्स 230। अगर क्योंकि अबोव दिस लेवल, अबोव टुडेज हाई विच इज अराउंड 215, 215 क्या, 17 215, हाँ अबोव 215, तो ये it has potential to move up. अभी we are at a resistance, let us see if the resistance will take. If the resistance will not take, then actually ऊपर जा सकता है। अगर resistance लेकर इसके नीचे आ जाता है, then it is on the downside, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है। वॉल्यूम if you see 8, शायद यहाँ पर इट कैन ट्राई टू मूव अप। ओवरऑल एक्चुअली अभी यहाँ पर ट्रेंड तो ठीक ही लग रहा है, सो इट इज अ बाय ऑन डिप्स एज आई कैन सी। एक काम कर सकते हैं, वी कैन लुक एट अवर कैलकुलेटर आल्सो। ये 5 पॉइंट एक्चुअली है 216। एक काम करते हैं, लेट अस गो टू अवर इंट्राडे कैलकुलेटर। 216, ओके 218 के ऊपर बाई है, 218.63, 219.96, ये एक्चुअली लेवल्स आ रहा है। तो इट कैन एक्चुअली, कोई भी डिप आता है तो ये लेवल्स बनेगा। तो अभी के लिए तो ये बाई दिख रहा है एज ऑफ नाउ, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट लेट्स सी, क्योंकि वी आर एट दैट रेजिस्टेंस पॉइंट, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या काम करेगा वो देखना पड़ेगा।
तो डिप में ही बाइंग करनी है, यहाँ पर बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि देर इज अ रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट एक डिप तो बनती है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू take the prices down. It can definitely ensure that it can at least get the prices little on the downside. Okay, these are stocks which are showing that at the higher level, we are at that higher level. So देखते हैं, अपोलो टायर्स देख लेते हैं. टायर्स, the 430 is a important level. As long we stay above 430, it is positive. Below 430, it is negative. तो देखते हैं कि क्या करेगा मार्केट. तो दिस इज एट द सेम लेवल वी आर देयर. तो आप देखोगे तो ओपन हाई बना है, तो विच इज अ नेगेटिव पार्ट. तो इसका मतलब क्या है, लेट अस सी हियर द व्हाट इज द एटीआर. 7 पॉइंट्स है, लेट अस ऐड दिस. ओके, सेलिंग इज बिलो 431 एनीवे, वो हेज आ चुका है. सो दीज आर द लेवल्स फॉर अपोलो टायर्स. ये लेवल है अपोलो टायर्स के लिए. तो दिस इज अपोलो टायर्स. लेट अस सी, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं. अदानी पोर्ट्स देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है शायद. तो अदानी पोर्ट्स, ओके. अदानी में देखिए अगेन 730 इम्पोर्टेंट लेवल है. 730 के ऊपर ऊपर है, 730 के नीचे नीचे है. सो एज ऑफ नाउ लेट्स सी व्हाट इट कैन डू. एज ऑफ नाउ तो ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है. देखते हैं कि सस्टेन करता है कि नहीं करता है, because we have been getting resistance at that higher level again and again. So if it can stay above this, it is positive. अगर नहीं करता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल का संकेत आ चुका है, ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है. इट इज हैविंग ए प्रॉब्लम स्टेइंग एट द हायर लेवल्स. तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाता है तो यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस आ सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. बट एज लॉन्ग एज इट इज अबव 731, सॉरी 730, इट इज सपोज टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड. अभी तो वही लेवल पर ही है, तो इट हैज टू स्टे अबव दिस. तो लेट अस लुक एट द इंट्राडे के लिए टू 730 724, एंड व्हाट इज द रेंज. Range is around 30 35 points. 724. अब वो 729 बाई है. ठीक है, ऑलरेडी ये इसके. ओके, तो अभी के लिए अगर हमको लेना है तो ये एक्चुअली स्टॉप लॉस बनेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा. किसी 720 721 पर स्टॉप लॉस बनेगा, और ये ऊपर जा सकता है एज पर द कैलकुलेटर. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज टू स्टे अबव 729. वरना आपको 729 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, बट वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला चीज है.
क्योंकि 729 इज नाउ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 729, 730 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अबव दिस इट इज सपोज टू बी पॉजिटिव। एक और स्टॉक ले लेंगे। So you can use the calculator for the levels, and you have to understand that risk reward maintain करना very very important है। risk reward ठीक है तो ठीक है, वरना देखिए 730 के नीचे एक्चुअली रह जाता है, 729 के नीचे भी चला जाता है तो एक्चुअली ये नेगेटिव ही है। तो 732 के ऊपर एक्चुअली आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन लुक एट द शॉर्टिंग साइड। तो एक लॉस स्टॉक में लेता हूँ हिंडाल्को का। लेट अस सी व्हाट द हिंडाल्को इज सेइंग, क्योंकि वी आर नेगेटिव अबाउट द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट कहाँ पर है? इट इज स्टैग्नेंट। देखिए यहीं पर एक्चुअली शायद दोपहर तक बिताएगा, इट विल नॉट डू एनीथिंग। तो इंडेक्स में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अभी। साइडवेज में क्या करोगे आप? कुछ नहीं बनेगा। ओके, हिंडाल्को अगेन ये 430 इंपॉर्टेंट लेवल है हिंडाल्को के लिए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ आवर कैलकुलेटर स्क्रीनर। ये आपको it will give you something which is near to that number. So what happens is हमारा risk reward जो है it is going to be very much favorable. Overall structure of the stock is negative to sideways only at this point of time. थोड़ा negative ही है। तो below 430 it is on the sell side only. आप देखोगे तो preferably below the low of today is ideally a sell. अभी तो सेल ही दिख रहा है, यहाँ पर कोई बाई का नहीं दिख रहा है। So if we have to go with the calculator, 429 and the range is around 6 points. Okay, 431 के नीचे सी 431 के नीचे सेल ही है। तो इसका मतलब है ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि वी विल गेट द एक्चुअल फिगर। तो देखिए ये चाहिए हमको। दिस इज फॉर हिंडाल्को। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है, बट यहाँ पर सो पहले वाला कौन सा था? दैट वाज फॉर the first one which we had shared, that was for Apollo tires, and ये हिंडाल्को के लिए है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट इज गेटिंग इनटू अ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन के बाद ये अगर इट हैज टू कम डाउन, देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। it has to start trading below this. This is our first level of confirmation that नीचे जाने की कोशिश हो रही है for Nifty. Okay, Nifty के लिए it has to go below this, and Bank Nifty के लिए देखिए 45,000 के नीचे जाना पड़ेगा। So it is in this range, ये रेंज में है, ये रेंज से नीचे जाना पड़ेगा। That's why I told you on the option itself, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो let that option start trading below it. ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल पर ही रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ओके, एक काम करते हैं। अभी टाइम जो है नेक्स्ट 15 मिनट्स में वी आर गेटिंग अ गैन टाइम। देखते हैं, हो सकता है कि एक टॉप बना दे फिर से, शायद एक्चुअली इस टॉप को ब्रेक कर दे या इस रेंज को ब्रेक कर दे।
Any of the things is possible. इसने तो ये एक्चुअली नया हाई बनाया है. Okay. Now the most important thing is to mark this range, और इस रेंज के नीचे जाता है तब एक्चुअली सेलिंग है. जब तक इस रेंज में है नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती है. और ऊपर का कुछ नहीं बनता है क्योंकि ऊपर में 45,000 इज वेयर वी हैव हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट. इस पूरा हफ्ते का पूरा महीने का एक्चुअली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है. एंड वहां पर टॉप डबल टॉप की तरह भी बन रहा है. तो वहां पर एक्चुअली फंसना ही है. तो ऊपर एक्चुअली कुछ नहीं बनता है. ऊपर अभी तो रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल नहीं है यहाँ पर टू टेक एनी बाई ट्रेड. तो बाई तो नहीं बनती है यहाँ पर. Only sell is possible, but for that sell, this has to break. Then only the sell will come. ठीक है. And probably Bank Nifty will give us this levels earlier to Nifty, but उसके लिए भी it has to start trading below 45,000. As long it is above 45,000, यहाँ पर कुछ नहीं बनती है. यहाँ पर it is very much sideways. देखिए यहाँ पर put भी नहीं बनती है, call भी नहीं बनती है. And if at all it starts going above 45,200, देखिए कल का हाई के ऊपर it has to sustain. अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मे बी अनदर 100-200 पॉइंट्स मिल सकता है. बट यहाँ पर तो प्रिफरेबली ट्रेड नहीं बनती. वी आर एट ए रेजिस्टेंस जोन, एंड इस रेजिस्टेंस पर क्या होगा कि फंसाएगा मार्केट. मार्केट इज ओनली गोइंग टू ट्रैप यू. सो नाउ वन टाइम इज एट दिस प्लेस. अगर यहाँ से ही कुछ मूवमेंट आना स्टार्ट करता है तो अच्छी बात है. वरना इट कैन स्टार्ट गिविंग अस मूवमेंट समवेयर हियर अराउंड 12:30 12:45 यहाँ पर. वरना ये 1 बजे के आसपास. सो यहाँ कहीं पर एक्चुअली मार्केट चेंज हो सकता है. वहां तक एक्चुअली शायद साइडवेज रहेगा. निफ्टी तो पॉजिटिव है. निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है एंड पॉजिटिव है. तो निफ्टी में तो शॉर्ट बनती ही नहीं है. जो भी शॉर्ट बनती है वो बैंक निफ्टी में बनती है. ओनली बैंक निफ्टी इज वीक, एंड निफ्टी we can become weak only provided 19,300 is broken. Then actually निफ्टी में वीकनेस आना स्टार्ट हो सकता है. अभी के लिए तो इट हैज टू एटलीस्ट ब्रेक दिस. इसके नीचे तो आना पड़ेगा. एज पर अवर कैलकुलेटर ये दूसरा टारगेट के आसपास गया है. तो देखते हैं. Is the high it has made. High is 96. Okay, let's see बैंक निफ्टी का फ्यूचर में क्या किया है. See if at all it can make a new high. देख लेते हैं. यहाँ पर तो कुछ नहीं है. Just a minute. Okay. तो लेट्स वेट फॉर द टाइम. अभी टाइम जो है
it is going to get started now between 10:45 to 11 o'clock. Let us see where it will head from here. क्या ये एक नया हाई बनाएगा या यहीं से इट विल स्टार्ट रिवर्सिंग? देखिए मेनी टाइम्स क्या होता है कि एक दो कैंडल इधर उधर हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई दैट यही कहीं से मार्केट रिवर्स कर सकता है. Okay, our time has started now. So the next 15 minutes is going to be very important. Let us see. Generally या तो ये एक और हाई बना सकता है या यहीं से रिवर्स कर सकता है. तो देख लेते हैं कि क्या करेगा यहाँ पर. तो ये जो हाई लो है for this particular candle, high low, that is very important. ये कैंडल का लो के नीचे आकर if we start trading then it is negative. Any of you have any doubts? Anything you want to ask? Any clarification? Let's just wait for some time. See, until unless we stay above this candle, it is best to wait. Okay. थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि करेगा क्या मार्केट. विक्स को भी यहाँ से देखिए, विक्स इज आल्सो कंसोलिडेटिंग हियर. तो विक्स ऊपर जाता है और मार्केट नीचे आता है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा. तो लेट्स सी. बट ये जो दिख रहा है ना, ये 115 के बाद ही दिख रहा है. तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है तो फिर से यहाँ कहीं पर रुक जाएगा शायद. Strike price you can see 45,100 at least. We want in the money, right? So 45,100 is the best one which we have chosen. There is this 45,100.
It has to start trading. ये देखिए ये open high बना है, so it has to at least come above this what is say 340 is actually what we are getting as the price. अभी के लिए क्या होता है कि जो लो बना है, it can come and keep it can keep actually staying in the range, in that lower end of the range. 45,000 call. Okay, call option you are seeing. Call option you can just see 44,800, 45,000 भी आप देख सकते हो, but still see as of now तो सब पॉजिटिव ही है. देखो ये एक और हाई बनना है. क्या हाई बना है? 76, 77, या परफेक्ट, एक हाई बना है. So the now the most important thing is ये जो हाई बना है, इसको अभी हम स्टॉप लॉस हंट ही मानेंगे. एक and हाँ, it will go up. Right now call will go up anyway. As of now we are only looking at see it is on the buy side only. मैंने आपको बताया भी है 45,000 के ऊपर ऊपर ही है, 19,400 के ऊपर ही है, बट यही से रिवर्स हो सकता है. देखिए दिस वुड बी द हाई. ओके, now the most important things below this low, which is 45,023, it has to start trading below that, and it has to start trading going below that. Then only actually you will get any kind of selling. See, for 45,000 call option, whatever was the price, you have to take that and use the Gann levels. 1 minute, where is that? 45,000 call option. See, 175 is the price. Let us actually add this. 175. Okay. Above 190 is the buy. Okay, 210, 230, 250. This is the levels. See, if it goes to 210, your stop loss has to be trailed to 190. And if you are actually it goes to 230, you have to trail your stop loss to 210. If it goes to 250, trail your stop loss to 230. So that is how you can actually keep on going. No volume. What volume? Volume is off. Volume is off. Are you able to hear me or not? My volume is not off. Can you all hear? Jason is saying can't hear. Jason, you have a problem. Others are able to hear. Okay, this is the level for the 45,000 call option. Okay, as of now, it has gone higher. See, it can go high, but it will only trap you here. Don't stay here. This is not a place to stay. If you are making some profit, take profits. Keep trailing, no problem with trailing. As long it is up, it is fine.
Okay, as long it is up, fine. But shorting will come only below 45,000, or when that when our level actually gets breached. So the day high in the option has to get breached. That is the place where you may start seeing that reversal which is going to happen. As of now, it is very uh, sideways. It has just breached this. Now the most important thing is, see, that's what here it has to start consolidating here and break this level, then actually it is a down. Otherwise it is on the upside or sideways. This also, it has to come, break this and go down, then only it is going to go down. Otherwise it is going to be sideways to positive only. Overall market is still looking quite strong. Wow, 44 stocks are up. Hardly these stocks are down. Rest all stocks are up. Okay, PCR is increasing here. So let's see. 60. It may start consolidating here at this higher levels. Only at these levels something will happen. As of now, everything is looking on the positive side only. Okay, let us see if in the option, did the low change, especially in the bank nifty. This is call. Let us look at the bank nifty put. 203 was the low. Let us see. A low has not got breached in case of bank nifty put option, that is 45,100 put option. It has just gone and tested 45,100. That is a very important level for us. Let's see if it is getting rejected, then a good possibility of getting a reversal here, but let it actually calm down a little bit to give us some confirmation. Okay, Nifty has done two targets as per our calculator.
Okay, next 1 minute left for this particular candle to get over. Okay, the time is done for this. So what is important is until we start training, see, preferably for me, it has to go below this only. Then only it is an ideal sell opportunity. And we can actually also do one thing. If suppose this is our reversal, if suppose this is the reversal, this is the top, in that case, if you have to look at the option, so let me refresh once again. So we need the low of this and we will use it to build a new level on the calculator. And now what is important, I'll tell you. And if it can stay there, see, as of now, it is still not a confirmation. It could be more of a sideways. So you can only look for smaller targets. Okay, it has made a new low. If you see, this is 191. So what is important is we'll add 191 here. See, above 210 only is the buy. Okay, till it is not going above 210, there is absolutely no buy. So earlier also it was the same case. So I don't see any major challenge in this. So it is still in that same cycle as per that. So now if it actually goes above 190, sorry, 210, then 200 is our stop loss. So, and we can actually look at taking the trade. So till then, no buy in case of Bank Nifty options. Nifty also can take resistance here. So let us look at Nifty 19,500 put. So let us refresh this. So 65 is the low. Let me add this here. Okay. So for me, I will not take at 70. I'll take look at 80. It has to go at least 80 because this number is too small. So minimum 80 it has to go. And initially our stop loss still will be 65 only. And when it starts moving higher, we can trail our stop losses. Because the prices are too low, we have to have a little better thing. Because at 75, if you want to take the trade, then actually you have to keep the stop loss also below 65 because it may again come and retest those also. You see what happens at the lower level, uh, the possibility of stop loss hunts will be higher. So you need to be a little careful.
So if we are going after it has already moved a little bit higher, then actually the possibility of stop loss will actually getting hunted will be reduced. So currently at this point of time, from my side, I am not expecting that getting into any fresh buying here. Risk reward is definitely not favorable. यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कोई भी फेवरेबल नहीं करता है. यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है पुट के लिए ही फेवर करता है, बट ओनली इफ इट इज गोइंग टू क्रॉस दैट लेवल्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए बैंक निफ्टी में भी ये थोड़ा सा फिर से ऊपर गया है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल ही है. तो अगर इसके ऊपर ही रहता है तो यहाँ पर पुट नहीं बनती है. It has to stay below 45,000, then only put will come. And bank for Nifty, देखिए ये यही लेवल से ही एक्चुअली वो नीचे आया है. तो ये लेवल में बेयर्स हैव टू कम एंड अगेन लुक फॉर अटैकिंग. एक बार फिर से वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही लेवल से ही सेलिंग आया है. तो दैट इज द रीजन वेयर वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ से सेलिंग आ सकता है. बट उसके लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करते हैं. एटलीस्ट ये 50 पॉइंट तो नीचे आए, 19,450 के नीचे आएगा, देन एक्चुअली इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं. अभी इस लेवल पर देखिए कर तो सकते हैं, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस रहता है, खतरा ज्यादा रहता है. वरना तो कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे हिसाब से यही से रिवर्स होना है. सी रिमेम्बर, देखिए ये हमारा टाइमिंग्स था. तो देखिए ये नेक्स्ट इसके बाद जो कैंडल बन रहा है, ये एक्चुअली रिवर्सल का संकेत दे रहा है. कंफर्मेशन तो नहीं है, बट रिवर्सल का संकेत तो है. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लेवल्स. तो बैंक निफ्टी में इट हैड टू क्रॉस व्हाट 210 इट हैड टू क्रॉस. अगर ये 210 क्रॉस करता है तो यहाँ पर बाइंग हो सकती है. देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिफ्रेश होने के लिए. ओके, अभी भी 200 है. इट हैज टू क्रॉस अनदर 10 पॉइंट्स, उसके बाद ही इसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक आप सबको लेवल्स पता है, समझ में आ गया होगा. तो आई विल एक्चुअली, आपका कोई डाउट्स है तो आई विल क्लियर द डाउट्स. अदरवाइज वी विल वाइंड ऑफ द सेशन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मेरे हिसाब से और ज्यादा साइडवेज ही हो सकता है. एंड धीरे धीरे से ही मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट जो है शायद अभी थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, बट मेजर मूवमेंट में कम ओनली आफ्टर 1. So there's no point in actually staying here for hours together without ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर. It may actually remain more sideways. Any doubts you have, let me know. If there is no doubt, we will wind up the session here. Any of you have any doubt? All of you are clear? How to see OI data? OI data you can see in this option chain. No? How to see in the sense you have no idea about understanding how to read the option chain, then preferably you should actually I have another program which is about option trading experts. वहाँ पर actually you can actually
अटेंड दैट, क्योंकि यहाँ पर आई कांट एक्सप्लेन यू इन 5 minutes. बहुत सारा चीजें है which you need to understand. Good morning, sir. Good morning. Sir, this is Ram Gopal. Tell me, Stock sir. screener, sir. How to that today I want to see the Coforge and Apollo Hospital and Dixon. In our screeners, how to find out, sir? What you want to look for? Dixon, is it? Yeah, Dixon and Apollo Hospital and Coforge. Okay, 1 second. Let me show you Dixon you want to see. Let's take Yeah, for how to example. in our screener, sir. No, in screener, sir, see what happens. Screener will only give you can screen it based on the volume spikes. You can screen it based on the closing, on the basis of opening, on the basis of low or the high. Okay, in that the best of the stock I want to choose that today trading purpose. How to choose it? Okay, for that you have to see, you want to look for buying or selling. At this point of time, market is at the peak and we are looking at the selling opportunities. For that reason, what you have to do is you have to screen this based on the high. Getting it? You have to screen it based on the Gann high price. So when you screen this based on the high, let me actually show you. You are getting all these stocks. So these are the stocks where at the higher level it is there. That means the high is actually nearby to the Gann levels. So if you look at this, that's why I think you attended a little late. I had picked up a couple of stocks here. I had picked up, see for Dixon, I think I have marked this. Is this the level? Yeah, 4300 is the level for Dixon. But Dixon has it come here? And let's see. Dixon has not yet got reflected here. See, in case of Dixon, this is very important for us. From technically also, there was a gap here, 4348, 319. Okay, it has filled that gap. So the thing is now it has the potential to come down. This is important. It start trading below 4300. That is where you can look at selling. As long it is staying above 4300, it is positive. Below 4300 only, it is negative. Are you getting it, sir? Dr. Ram Gopal, sir, are you able to get this? This is for Dixon. For Dixon, this is the level. For that, what you have to do is you have to come to this positional calculator and you have to add the nearest price or the closing price. So 4340 or something, whatever was the level, it will tell you this is the most important place. So this is giving you the positional place, and this place is actually ideal because your risk reward is very much favorable. So as long it stays above this, if you look at this, what is happening in case of Dixon, it is trying to form a CIP here. It is also having this. There was a gap down also here. From all the perspective, there is all the possibility it will start going down, but it is supposed to stay below 4300. If it stays below 4300, then it is on the downside. Immediately seeing this screener, we have to trade. That is not possible. I didn't get you. Immediately we see the screener, we immediately take the stock. Buying. See, screener is only going to screen the stocks for you. It will you cannot actually use that for trading. For trading, you have to use the other calculator. Screener is only a screener. It is going to screen and give you which stocks are good from the buying or from the selling. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. Is that clear? Yeah, clear, sir. Thank you. Okay, thank you.
Yeah, anybody else has any other doubts? Okay. Okay then. See you in the next next session. Thank you very much. Bye bye.